Good morning everyone. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at your homes. So, in the previous video, you all learned about tense, its forms, that is past tense, present tense and future tense. Then you all studied about the different forms of past tense, that is the first two forms, simple past tense and past continuous tense. Today we will be discussing about past perfect tense and past perfect continuous tense in detail. So let's begin with past perfect tense. So the basic rule while you use past perfect tense in a sentence is subject. सबसे पहले जब भी आपको सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. Let's understand with the example. The train had left when we reached the station. Train क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या यूज़ करना है had, so had, then past participle form of the verb left. Left किसका past participle form है, the verb leave का past participle form क्या होता है left. So this is the rule for using past perfect tense in a sentence. Subject plus had plus past participle form of the verb. Now forms of past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स, जब भी डिफरेंट सेंटेंस होते हैं तो उनमें पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता है. नाउ इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो कैसे यूज़ करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को, क्या रूल है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, ही हैड क्लीन द रूम. रूल क्या था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हैड तो हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्लीन, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है क्लीन्ड, सो वी हैव यूज्ड हियर क्लीन. सो ही हैड क्लीन द रूम. देन ही हैड लर्नड द लेसन. ही क्या है सब्जेक्ट, हैड फिर उसके बाद यूज़ करना तो सो वी हैव यूज्ड हियर हैड. देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्नड. लर्न का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है लर्नड, सो वी हैव यूज्ड हियर लर्नड. So I hope you all have understood the rule for positive sentence. So for using past perfect tense in a sentence, and if the sentence is a positive sentence, the rule is subject plus had plus past participle form of the verb. Now let's move on to negative sentence. If the sentence is a negative sentence and you have to use past perfect tense in the sentence, the rule is subject plus had plus not plus past participle form of the verb. पूरा रूल बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस के जैसे ही है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है आपको, हैड के बाद नॉट, क्योंकि सेंटेंस क्या है नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी एन एग्जांपल. द सन हैड नॉट रिजन येट. सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है तो सब्जेक्ट यहाँ पे सन, फिर क्या यूज़ करना है हैड, सो वी हैव यूज्ड हियर हैड, फिर नॉट, सो नॉट, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइज का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, राइज, रोज एंड रिजन. सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब राइज इज रिजन, सो वी हैव यूज्ड हियर रिजन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फॉर नेगेटिव सेंटेंस द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ if the sentence is an interrogative sentence, means if you have to ask a question, then the rule for using past perfect tense in a sentence is had. सबसे पहले had आ जाएगा, had will become the question word, then subject, then past participle form of the verb, फिर verb का past participle form. Example, had he played, had he arrived. सबसे पहले had यूज़ करेंगे question start करने के लिए, फिर उसके बाद subject, फिर verb का V3 form, past participle form. I hope it is clear to all of you. Now यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस की यूजेस मीन्स कब यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को. फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. जब किसी एक्शन, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना है हमको जो टाइम से पहले, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो टाइम दिया गया था उसको कंप्लीट करने के लिए, उससे पहले ही वो कंप्लीट हो चुका हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड मेट हर सम डेज बिफोर. मैं उसे कुछ दिन पहले ही मिल चुका हूँ. सो गिवन टाइम से पहले अगर कोई काम ख़त्म हो जाता है तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को.
Now, to denote an action completed at some point in the past before another action took place, ऐसे action को denote करने के लिए जो past में तब हुआ हो जब उसके बाद दूसरा action होने वाला ही हो, तो दूसरे action के होने से पहले ही past में जब कोई action हो चुका हो के complete हो चुका हो, उसको हम denote करने के लिए past perfect tense का यूज़ करते हैं. Example, when I reached the bus stop, the bus had left. जब वो बस स्टॉप पहुँचा उससे पहले ही बस चली जा चुकी थी, वहाँ से लीव कर चुकी थी बस स्टॉप को. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो when we use this type of tense to indicate an action which started in the past and was still in progress at the moment of speaking or had recently finished, ऐसे action को denote करने के लिए जो कि past में start हुआ हो और फिर भी प्रोग्रेस में ही हो, चल ही रहा हो, ख़त्म ना हुआ हो बोलने के वक्त तक या फिर बोलने से कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ हो. सो ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और चल ही रहा हो, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. दिस टेंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द प्रीवियस थ्री फॉर्म्स, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये तीनों फॉर्म्स को मिला करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है. सो the basic rule for using past perfect continuous is subject plus had plus past participle form of the subject plus had been plus verb plus ing plus object. This is the basic rule for using past perfect continuous tense. सबसे पहले subject plus had been plus verb plus ing plus object. Let's understand with the example of a sentence. Nana had been painting a beautiful peacock. So, Nalini is a subject, then had been plus verb plus ing. So, verb is paint, to paint, and उसमें हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे ing, so painting, then the object. So, it becomes Nalini had been painting a beautiful painting. So the basic rule is subject plus had been plus ing form of the verb. Now forms of past perfect continuous tense. different type के sentence में कैसे use करेंगे हम past perfect continuous tense को. So when the sentence is positive sentence, the rule is subject plus had been plus ing form of the verb plus object. So example, the puppy had been sleeping. So as I told you all, the rule was subject. So here the subject is the puppy, then we had to use had been, so we have used here had been, then ing form of the verb. So ing form of the verb, sleep is the verb, उसमें हमने ing लगा दिया. So I hope the rule for positive sentence is clear to all of you. Now let's move on to negative sentences. When the sentence is negative, what is the rule for using past perfect continuous tense? So the rule is subject plus had not been plus ing form of the verb plus object. Example, let's see, understand this rule with an example. Nalini, which is the subject, then had not been, so had not been plus ing form of the verb plus object. So ing form of the verb paint, ing we have used here, so it became painting, then a beautiful peacock, which is the object. So this is how you use past perfect continuous tense in a negative sentence. Subject plus had not been plus ing form of the verb plus object. Now when the sentence is an interrogative sentence, means when you have to ask a question, what is the rule? Had will be used. सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? Had. सबसे in the first you will be using had, then comes the subject, then been, then ing form of the verb, then object. Example, had Nalini been painting a beautiful peacock? So had is being used to in the beginning to ask the question. So first we'll use had, then the subject, which is Nandini, then been plus ing form of the verb. So been painting, then object, so a beautiful peacock. So this is how you use past perfect continuous tense while asking a question. So I hope all the four form of tenses have been clear to you now. Your homework is to practice exercises based on past tense. That's all for today. Thank you.